Uh, Gosh, I think we can start, right? It's been live stream now. Uh, Ladies and gentlemen, all the participants, first of all, I would like to request all you to mute your audio. Yeah. So, good morning, ladies and gentlemen. I myself, Mohammed Naif, the manager for the Central Nodal Agency Sustainable Tourism from Ministry of Tourism. I'm the host for this today's webinar, and it's my absolute pleasure to welcome you all to this ninth episode of the Sustainable Tourism India webinar on this very good or the very relevant topic for the current scenario. Like it's uh, Travel for Life case study competition, tourism for tomorrow, inviting successful and sustainable case studies for India. Our esteemed nodal officer, esteemed guest for this today's session, on nodal officer for the Central Nodal Agency for Sustainable Tourism, Professor Monica Prakash, will be leading this entire session, offering invaluable insights into the competition from guiding applications and submission of in detailing the guidelines and addressing all queries related to this competition, which will, of course, enrich and understanding better understanding about the competition and prepare all of us to participate effectively through this competition. Ma'am, extending the earliest welcome to you, ma'am. Thank you so much, Laif. Yeah. Namaskar, everyone. Let me just give you a brief of what CNA Sustainable Tourism Nodal Agency is like. I'm basically a professor at the Indian Institute of Tourism and Travel Management, and which happens to be an autonomous body of Ministry of Tourism. We have been very fortunate that the IITTM, under the leadership of our present director, Professor Alok Sharma, we have been able to fetch 4 central nodal agencies of Ministry of Tourism. The basic objective of Central Nodal Agency is to ensure that the very relevant areas that we have right now addressing to tourism, like rural tourism, sustainable tourism, eco-tourism, and adventure tourism, are being taken care by IITTM. I am basically the Central Nodal Agency nodal officer, wherein we are actually aiming towards making sure that whatever policies have been initiated by Ministry of Tourism, we are in a position to implement them. So today's seminar we would be talking about the case study competition, which has been very shortly launched, and I hope I'll be able to make a justice of the time that has been allotted to me. Thank you, Naif. Over to you. Yeah, thank you, ma'am. Thank you, ma'am. As ma'am has briefly explained, the competition is actually it's a very recent initiative launched by Ministry of Tourism on World Tourism Day 2023 on 27th September. So the competition aims to recognize and highlight the outstanding initiatives contributing to the betterment of the tourism industry. By joining us, you will engage in the exploration, analysis, and showcasing of these commendable efforts with ultimate goal of facilitating their nationwide adoption. So before deep diving into this topic, let's have a small introduction, a brief video which explain what exactly this competition is all about. So without much ado, let me begin with that video. Is my screen visible? Yes. The G20 New Delhi Leaders' Declaration noted Goa Roadmap for Tourism as a vehicle to achieve the Sustainable Development Goals. The declaration also noted the launch of Travel for Life and supported the development of smart destinations that are responsible and sustainable. Goa Roadmap provides a new direction for the tourism sector, outlining the challenges, objectives, opportunities, and recommendations under 5 key priority areas for the tourism sector to achieve SDGs. To create a lasting legacy for India's G20 presidency, the Ministry of Tourism has set up the G20 Tourism and SDGs Dashboard in collaboration with UNWTO. This first-of-its-kind dashboard showcases the best practices and case studies from G20 countries aimed at achieving SDGs.
The Ministry of Tourism is all set to take the G20 momentum forward and announces the launch of Travel for Life case study competition, Tourism for Tomorrow. This pioneering initiative calls on line ministries and state governments, travel, tourism and hospitality industries, related industries and stakeholders to share their best practices that have successfully contributed to sustainable tourism in India. These case studies should have addressed the challenges identified under the 5 key priority areas of the Goa Roadmap. Driven by the Honorable Prime Minister's vision of developing tourism in mission mode, the Travel for Life case study competition shall be a catalyst for change, showcasing best practices which can support the transformation of tourism towards a more sustainable, responsible and resilient future through collaboration and knowledge sharing. An incredible array of rewards awaits the winning entries. The shortlisted case studies will be featured on the Sustainable Tourism website of Ministry of Tourism and a national compendium to foster mutual learning and collective action in advancing towards SDGs. The Ministry of Tourism will further support selected entries in each priority area of Goa Roadmap in areas of business development, networking and impact creation. Participate in the competition today and accelerate India's progress towards the 2030 Agenda for Sustainable Development. Share your best practices and be recognized for your commitment and contribution towards sustainability. Ministry of Tourism invites both public sector and private sector to be a part of this game-changing transition of the tourism sector. Don't let this opportunity slip away. Visit our portal for more details. Let your innovative practices of today shape a brighter tomorrow for tourism. Travel for Life case study competition, Tourism for Tomorrow. Yeah. So thank you all for watching that short video about this Art for Life case study competition. So I think it has given a brief intro about what exactly is competition and what is the background related to the this case study competition. So let's get into the agenda of today's webinar. So majorly we have 4 agendas. Firstly, it is about highlighting the overarching goals and objectives, showcasing the competition's significance in driving positive change, how exactly this competition is relevant to the present context or present scenario and all. And secondly, we'll be looking deep into the breakdown and the procedural steps from registration to submission, elucidating the evaluation criteria and the key milestones, the basic technical sides of the competition. How exactly we have to register, how can we apply for the competition, and what will be the procedures for evaluation of this and all. And brief discussion on the recommendations and challenges addressed under the key priority areas of Goa Roadmap. So Goa Roadmap key priority areas is like if you have seen the video itself, we have been highlighted. Say entirely throughout the competition is based on dependent upon Goa Roadmap. So much details about this will be discussed in this webinar today. And finally, we'll have a detailed Q&A session for common queries related to the competition. So all the audience, please be alert and listen to the entire session and be ready with your questions and queries till at the end of the sessions. So without much ado, let's delve into this conversation. I would like to have I mean, make it as an interactive session. So I would like to put across some message that we encourage the participation. So please feel free to ask any questions in chat box, and we'll be glad to take it up towards at the end. So let me begin with the first session. Is like Monica, ma'am. Let me start. Right? Shall we start? Right? So Good. yeah, Can we just upon the request exam. all the participants to keep their audios on mute mode? Because we have a lot of background noise which is actually disturbing the other participants as such. आप लोगों से सबसे प्लीज ये रिक्वेस्ट है कि अपने ऑडियो मोड को म्यूट पे कर Ma'am. Yeah.
Yeah. So let's begin the session. Upon examining the competition's name, so it became evident that it aligns with the two major initiatives of Ministry of Tourism. How is the competition specifically connected to this Travel for Life initiative and the Goa Roadmap Tourism for Tomorrow? Uh, So let me just begin up with what this particular Goa to G20 Goa roadmap is and what is Travel for Life. इससे पहले मैं थोड़ा सा एक बारी को ये चीज को डिस्कस कर दूं कि आज हम एक डिफरेंट इनिशिएटिव के बारे में बात कर रहे हैं विच इज फॉर मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड दिस इज पर्टिकुलरली रिलेटेड टू दी सीएनए सस्टेनेबल टूरिज्म, जहां पर दो इनिशिएटिव्स जो मिनिस्ट्री ने स्टार्ट करे हैं उनके बारे में बात की जाएगी. जस्ट टू गिव यू अ ब्रीफ आइडिया व्हाट इज G20 गोवा रोड मैप. इस समय पे आई मीन एनीवे दैट वी टॉक अबाउट, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट सस्टेनेबिलिटी. सस्टेनेबिलिटी का मतलब है जब हम ये बात कर रहे हैं कि किस तरीके से we can make the entire planet pro-friendly. I mean, we are actually taking up pro-planet friendly practices and we are making sure कि इस समय पे just not the environmental concerns पर लोगों के economic और social concerns को भी हमारे को address करना पड़ेगा. G20 गोवा रोड मैप जो है वो इसी का आउटकम है. G20 के टाइम पे वी हैव कंडक्टेड, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म हैज कंडक्टेड 4 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप्स, जिसकी वजह से बहुत सारे आई मीन वी कुड एक्चुअली कम आउट विद अ लॉट ऑफ आई मीन observations as such, and this observation led to a compendium, a document known as the G20 Goa Roadmap, जिसमें हमने 5 की प्रायोरिटी एरियाज के बारे में बात करी है. की प्रायोरिटी एरियाज का मतलब वो 5 एरिया where we will be focusing on to make sure that the tourism sector ends up into taking up the sustainable practices. ये 5 की प्रायोरिटी एरियाज जो हैं वो है ग्रीन टूरिज्म, डिजिटलाइजेशन, हम बात कर रहे हैं स्किल की बात कर रहे हैं, हम एमएसएमईज के बारे में बात कर रहे हैं, डेस्टिनेशन मैनेजमेंट. Now, this is what we are actually making sure of कि हम किसी तरीके से मतलब ये मेकिंग कि हम लोग इन सब चीजों को एम्प्लीफाई कर पाए और हम इनको आगे की तरफ लेके आ पाए. ये तो हुआ G20 गोवा रोड. दूसरा इनिशिएटिव जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने स्टार्ट करा है उसका नाम है ट्रैवल फॉर लाइफ, एंड वी वर वेरी फॉर्चुनेट दैट ड्यूरिंग द लास्ट दैट न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन दैट वी हैड लीडर्स समिट, इन दैट पर्टिकुलर टाइम इट गॉट नोटेड का मतलब इस समय पे ये है कि द वर्ल्ड हैज रियलाइज्ड दैट वी रियली हैव टू बी वेरी सस्टेनेबल इन आवर प्रैक्टिसेस. Ma'am, you are muted. Please unmute yourself. So travel for life. Ma'am, again you are muted, ma'am. Ma'am, please check it. Mute. Yeah. सो ट्रैवल फॉर लाइफ जो है वो एक सब सेक्टोरल प्रोग्राम है जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने स्टार्ट किया है. आप लोग सब जानते ही होंगे कि प्राइम मिनिस्टर ने एक मिशन लाइफ प्रोग्राम जो था वो स्टार्ट किया था. मिशन लाइफ प्रोग्राम के अंदर पे उन्होंने ये अर्ज करी थी टू ऑल द इंडिविजुअल्स एंड टू पीपल ग्लोबली कि आप अपनी लाइफस्टाइल प्रैक्टिसेस की वजह से आप अपनी जिंदगी को तो बेहतर बना ही सकते हैं, बट वी कैन ऑल्सो मेक द एंटायर प्लैनेट ऑल्सो बेटर. ना इसी मिशन लाइफ के अंडर पे मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने एक प्रोग्राम्स इनिशिएट किया जिसका नाम है ट्रैवल फॉर लाइफ. ट्रैवल फॉर लाइफ के अंदर पे इट इज बेसिकली एन अर्ज टू ऑल द टूरिस्ट एंड द टूरिज्म स्टेक होल्डर्स टू मेक श्योर दैट you adopt practices which end up into a sustainability. And again, we are nudging the tourism and the tourism stakeholders to make sure that whatever action that you take to make your business and to make your travel a better one, that should be very mindful and conscious. Now, इन्हीं दोनों चीजों के बेसिस के ऊपर पे टूरिज्म फॉर टुमारो केस स्टडी कॉम्पिटिशन जो है वो इनिशिएट किया है, जिसके अंदर पे हमारा बेसिक इंटेंट जो है वो यही है कि इस समय पे वट एवर काइंड ऑफ गुड केस स्टडीज दैट आर बीइंग टेकन अप. केस स्टडीज का मतलब है जो आप लोग रियल टाइम प्रैक्टिसेस कर रहे हैं बीइंग द टूरिस्ट स्टेक होल्डर, चाहे आप होटल ओनर हो, चाहे आप टूर ऑपरेटर्स हो, चाहे आप किसी भी अकोमोडेशन के पे काम कर रहे होंगे, आपके द्वारा की गई अगर कोई भी सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस हैं तो हम उसको एम्पलीफाई कर सके, इस प्लेटफॉर्म पे लेकर आ सकते हैं ताकि लोग इसका फायदा उठा सके, एंड एट द सेम टाइम वी कैन शोकेस टू द वर्ल्ड हाउ गुड वी आर एट इवन टेकिंग अप द सस्टेनेबिलिटी. सो नई ये सारी चीजें जो हैं वो हम ट्रैवल फॉर लाइफ कंपटीशन के अंदर बात कर रहे हैं. इसी तरीके से ट्रैवल फॉर लाइफ इनिशिएटिव एंड द G20 गोवा रोड मैप जो है इसके साथ में सिंक है. राइट.
Yeah. Oh, so yeah, yes, ma'am. So for the competition is got that much of relevance because it is a combination of various initiatives from the ministries like Cover Roadmap and the Travel for Life at the same time, and also it is contributing much to the sustainable development, sustainable tourism in a growth of the cinema. So how exactly the competition is supporting the achievement of SDG goals, Global Sustainable Tourism Development Goals? Okay. So again, just let me brief you about it कि क्या होते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. एक्चुअली सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ये 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है जो कि UNWTO ने अर्ज किया है टू द एंटायर वर्ल्ड टू टेक अप ऑल दीज गोल्स सो दैट बाय 2030 वी जस्ट नॉट हैव द सस्टेनेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ एन एनवायरमेंटल फ्रेंडली अप्रोच, पर हम हर एक को मतलब राइट फ्रॉम द पर्सन हु इज एट द लोएस्ट लेवल टू द पर्सन हु इज द हाईएस्ट लेवल, हुएवर मे बी अ पार्ट ऑफ द एंटायर फ्रेटर्निटी, हम सबको किसी ना किसी तरीके से इसके अंदर पे फायदा करें. लाइक फॉर एग्जांपल वी मे नॉट हैव नो पॉवर्टी, वी माइट हैव द एम्पावर्ड वुमेन फोर्स इनटू इट, स्किल्ड लोग होने चाहिए, एमएसएमईज इसके अंदर पे फ्लरिश करनी चाहिए, हंगर नहीं होना चाहिए. हम क्लाइमेट के अंदर पे किसी तरीके से बात कर रहे हैं तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बेसिकली एम एट टुवर्ड्स मेकिंग द एंटायर प्लैनेट एंटायर इनटू अ वेरी सस्टेनेबल प्रैक्टिस. ना ये वो चीजें हैं जो कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंदर पे बात करते हैं. इस कंपटीशन के माध्यम से भी हम उन्हीं चीजों को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं. मान लीजिए कि आपके पास में एक कोई इनिशिएटिव आपने स्टार्ट किया, इसके अंदर पे आप एनर्जी को किसी तरीके से सेव कर रहे हैं. लाइक फॉर एग्जांपल सम इनिशिएटिव वेयर यू हैव बीन एबल टू मैनेज द सेविंग ऑफ वाटर. नाउ इफ यू कुड एक्चुअली मैनेज टू सेव द वाटर, दैट मीन्स you are doing a lot good to the entire planet as such. And this is one of the sustainable development goals that we have in our 17 wala list. So, this way we are able to connect to the SDGs, because any action that you would take towards sustainability definitely influences one of the SDG. And this is the basic idea, because by 2030, just not the tourism, but the entire world has to move towards sustainability. So this is how it is connected to sustainability as such. Yes, Nick. Yes, ma'am. So we are getting a better exposure. Like the competition is not limited to a national level initiative. It is much more of an international perspective we could take. Like we are working on something related to international level. Yes. So my next question is like, is this competition or this case studies, or does it have any specific criteria for entry? Like, it will be like anything, any initiatives related to sustainable tourism, or is there any certain limitations or certain eligibility for applying for this competition? Fine. So this particular competition has, I would not call it as a restriction, but it has a certain criteria as such. इस समय पे हम बात कर रहे हैं उन ongoing projects की जो कि इस समय पे चल रहे होंगे. Like for example, you must have started up any project, let's say 5 years back, but you are able to continue with that project, taking up all kinds of sustainable practices. So one major concern and one major eligibility criteria is that we are not talking about the initiatives which has started and which has ended up, let's say 3 years back. Now, when I talk in terms of sustainability, it has to be an ongoing project. The first thing is that it has to be an ongoing project. दूसरी बात ये है कि you must be able to map out the initiative with the 5 key priority areas that we have talked of. Like for example, suppose आपने अपने आप पे कोविड के टाइम पे कोई इनिशिएटिव स्टार्ट करा जिसके अंदर पे आपने अपने लोगों को जो उनके पास में हुनर था, वट एवर स्किल्स दैट दे हैव, आपने उनको रीस्किल किया, या फिर आपको ये लगता है कि आई मस्ट बी एबल टू मेक माय मेन मोर बेटर, तो आपने उनको क्या करा, आपने उनको अपस्केल करके उनको नए तरीके की स्किल्स उनके हाथ में दी. ना ये इनिशिएटिव जो है हमारे मैप पर, हमारे हम जो गोवा टूरिज्म फॉर टुमारो कॉम्पिटिशन कर रहे हैं, इसके अंदर ये स्किल्स के साथ में एसोसिएट होता है. सो द सेकेंड थिंग इज कि आपका जो भी इनिशिएटिव होगा वो हमारे 5 की प्रायोरिटी एरियाज में से किसी के साथ में मैप आउट हो सकता है. ऐसा भी हो सकता है कि आपके इनिशिएटिव जो है वो एक से ज्यादा की प्रायोरिटी एरियाज को कर रहे होंगे. ये आपको चूज करना पड़ेगा कि आप किस कंपटीशन के क्राइटेरिया के अंदर पे आना चाहते हैं. तीसरी बात, अगर आप उसके अंदर पे पढ़ेंगे डॉक्यूमेंट जो हम आपको इसके साथ में शेयर करेंगे और हम आपको उसका लिंक भी बता देंगे, जब आप उस डॉक्यूमेंट को पढ़ेंगे तो उसमें एक वर्ड आएगा चैलेंजेस. चैलेंजेस का मतलब है आपने किस तरीके से उन हर्डल्स को क्रॉस किया. नाउ यू मस्ट ऑल्सो बी एबल टू मैप आउट योर इनिशिएटिव अगेंस्ट दी चैलेंजेस. तो इस समय आपके पास में 3 चीजें जो है वो आपके लिए कंसर्न होगी. पहली बात ये कि एक ऑनगोइंग प्रोजेक्ट होना चाहिए. ऑनगोइंग प्रोजेक्ट का मतलब है कि
even if it has started 7 years back, even if it has started 2 years back, but it should be able to continue, क्योंकि sustainability by definition का मतलब होता है it must be long lasting. दूसरी बात, आपका इनिशिएटिव जो है वो किसी भी 5 क्राइटेरिया के अंदर पे, की प्रायोरिटी एरियाज के अंदर पे मैप होना चाहिए. यू हैव टू चेक आउट कि आप किस पर्टिकुलर कंपटीशन अरे के अंदर पे पार्टिसिपेट करेंगे. हालांकि आपके इनिशिएटिव के अंदर पे बाकी चीजें भी एड्रेस हो सकती हैं. तीसरी बात, जो भी चैलेंजेस उसके अंदर पे लिस्टेड हैं, आपका जो इनिशिएटिव है उन चीजों के अगेंस्ट भी मैप होना चाहिए. सो दीज आर द 3 पार्ट. पर सबसे अच्छी बात इसके अंदर पे जो है वो ये है कि इस कंपटीशन के अंदर पे सब पार्टिसिपेट कर सकते हैं. सबका मतलब ऑल दोज हु हैव द इनिशिएटिव्स इन हैंड, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर से हो, चाहे लाइन मिनिस्ट्री से हो, चाहे वो प्राइवेट स्टेक होल्डर्स हो. और इस टाइम हमने यूनिवर्सिटीज को भी इसके अंदर पे इनवाइट किया है. एंड द पर्पस ऑफ व्हाई वी हैव invited universities is because we really want to have all whatever that we have on the platforms to get documented. We want this to be carried to the next generation. We want this to be discussed in the classes. और हम चाहते हैं कि हमारे लोगों ने जितनी भी तरह की sustainable practices की हैं, our younger generation should know about it and then they should be able to take it ahead. तो नहीं, इसके अंदर पे क्राइटेरिया और इसके अंदर पे पार्टिसिपेशन किसका रहेगा, वो इन तीनों का रहेगा. Yes, ma'am. So, understanding it will be like it should be an ongoing. It is not more of an idea competition. It should be a case study competition, which is be like it should be successfully implemented and an ongoing project. At the same time, that projects or the initiatives or the best practices which should be aligning to the key priority areas of Goa roadmap. Very Exactly. good. Yeah. So yeah, ma'am. Then next week should we have to explain? Should we go into detail about how exactly these key priority areas of Goa roadmap? So in this entire document or in this entire competition, we have taken this as a major theme. So how is this competition aligned with these identified priorities? Okay. So, and अगर आप लोग इस समय पे गोवा रोड मैप को एक बारी को, आई मीन इफ यू आर विजिटिंग दैट पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट, तो हम ये देखेंगे कि जस्ट टू मूव टुवर्ड्स सस्टेनेबिलिटी वी हैव टू मेक श्योर कि हमारे एक्शंस भी जो है वो उसके साथ में अलाइन करने चाहिए. ना जितने भी हमारे वर्किंग ग्रुप्स हुए, टूरिज्म वर्किंग ग्रुप्स हुए, उनके अंदर पे जो कंक्लूडिंग, आई मीन द कंक्लूजंस दैट वी कुड ड्रॉ वाज कि दीज आर द 5 एरियाज. आई मीन इफ वी अडॉप्ट these 5 areas, we definitely be moving towards sustainability. And we need to understand that tourism is one area where this is acting as a vehicle for peace. Now, vehicle for peace का मतलब ये है adopting, I mean, tourism sustainable practices. We will not be able to make just ourselves environment friendly, but we'll be making a better place for everybody to live in. ना इन गोवा रोड मैप के जो 5 चीजों को हमने आइडेंटिफाई करा है, वो 5 चीजें जो हैं उनकी एडॉप्शन के साथ में आपकी टूरिज्म प्रैक्टिसेस सस्टेनेबल हो सकती हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर इस समय पे हर इंडिविजुअल, चाहे वो टूरिस्ट होता है चाहे टूरिज्म स्टेक होल्डर होता है, अगर वो इस तरह की ग्रीन प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करते हैं तो डेफिनेटली आप मूवमेंट कर रहे हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल, जस्ट अ स्मॉल एग्जाम्पल, like for example, we urge our tourists to take and carry the water bottle with them. Now imagine of it, अगर आप अपनी पानी की बोतल खुद ही लेते हैं तो आप बहुत बार प्लास्टिक बॉटल्स को कहीं ना कहीं पे खत्म कर देते हैं. इसी तरीके से हम ये चाहते हैं कि टूरिज्म स्टेक होल्डर्स जो हैं वो अपने यहाँ पर भी सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को लगाएं. लाइक फॉर एग्जाम्पल, दे शुड मेक श्योर दैट दे आर एबल टू कंजर्व द एनर्जी, लेट्स से सेव द वाटर एज सच. दे मस्ट मेक श्योर दैट द लोकल प्रोड्यूस इज बीइंग यूज्ड इनटू देयर प्रोग्राम्स. ना इन सब चीजों के माध्यम से आप सस्टेनेबिलिटी की तरफ आ सकते हैं. ना यही एक हमारा इस समय पे इंटेंट था कि जितनी प्रैक्टिसेस हमारे यहाँ पर चल रही हैं उन प्रैक्टिसेस को हम 5 इनकी प्रायोरिटी एरियाज के अंदर पे डॉक्यूमेंट करें. ना वंस अगेन, इनको डॉक्यूमेंट करने का मतलब है क्योंकि एक्नॉलेज्ड है बाय द वर्ल्ड एंड वी आल्सो हैव अ डैशबोर्ड. अगर आप लोग चाहें तो एक एसडीजी डैशबोर्ड है हमारे पास में. उस एसडीजी डैशबोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की साइट पर आप विजिट कर सकते हैं, जहाँ पे वर्ल्ड ओवर लोगों ने जितनी भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस करी हैं उनके अंदर पे बेस्ट प्रैक्टिसेस को यहाँ पे लिस्ट आउट किया है. एंड बेसिक इंटरेस्ट यही है कि उस आइडिया से हम और चीजों को सीखें ताकि हम लोग क्या कहते हैं इसके अंदर पे ज्यादा से ज्यादा, आई मीन, लोगों को ये बता सके कि कैसे छोटी छोटे इनिशिएटिव्स के साथ पे हम सस्टेनेबिलिटी को इसके अंदर पे लेके जा सकते हैं. तो दिस इज द बेसिक इंटेंट ऑफ including these 5 key priority areas in the Travel for Life competition. Yes, Naeem. Thank you, ma'am. I think it must be clear for all. I mean, what is that importance of key priority areas and how it has been got that relevance in this competition, the categorization role.
And now let us discuss about what exactly are the benefits of participants or the initiatives, if any initiatives participate in this competition, what exactly they will be getting or their interest. I mean, of course, we all will be interested in knowing that. So any competition with no outcome in it carries no meaning as such. So I mean, definitely हमने भी यहाँ पर इन चीजों को ensure करा है कि people get benefited out of it. इस समय पे I can see there are many IITFC students on the board and उसमें से किसी का एक question ये था कि can we also enroll in the program. Now, let me just tell you all that right now I'm talking about a very different initiative of Ministry of Tourism, which is known as the talking about the sustainable tourism as such. अगर आप कोई ऐसे कैंडिडेट हैं जहां पर आप कोई चीजें प्रैक्टिस करें, let's say suppose along with being an IITF students, you are also running up a let's say a hotel or you're running up any kind of a tour operating company as such, तो आप इसके अंदर पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं. अब आपको बेनिफिट क्या होगा इसके अंदर पे? देखिए, बेनिफिट जो होता है हमेशा मॉनेटरी टर्म्स में नहीं होता. बेनिफिट जो होता है वो नॉन मॉनेटरी उतना ही वेट कैरी करता है जितना कि आपका एक मॉनेटरी बेनिफिट कैरी करता है. पहली बात तो ये होगी, इससे बेनिफिट ये होगा कि वी विल बी एबल टू शोकेस द वर्ल्ड दैट हाउ मच इंडिया हैज बीन very conscious of the different kind of practices that we have. Definitely imagine the listed 75 case studies if they are on a dashboard, and this is just not the limit. These are just the chosen first 75 cases that we have. These case studies would be there on the global map and it would be taken up by the others as such. तो पहली बात तो ये कि you will be able to showcase those kind of a thing. दूसरा, इसके अंदर आपको बेनिफिट ये रहेगा कि यू विल बी ऑन अ बोर्ड पे यू विल बी एबल टू मेक अप नेटवर्किंग विद द पीपल. आपकी विजिबिलिटी इसके अंदर पे बढ़ेगी, आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी एंड आपके आइडियाज को, इनिशिएटिव्स को एक मार्क मिलेगा. नाउ इमेजिन ऑफ इट दैट यू आर लाइक मी, मे बी देयर वुड बी अ डे व्हेन यू वुड आल्सो गेट अ चांस कि आप वहां पर आके अपनी बात को लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं और आप उन्हें ये कह रहे हैं कि आप किस तरीके से अपनी बात को आगे लेकर जाएंगे. सो यू ऑल्सो गेट अ स्पेस, you also get a platform, you get a portal wherein you can put up your ideas as such. तीसरी बात ये होगी कि आपके आइडियाज जो होंगे वो डॉक्यूमेंट होंगे. डॉक्यूमेंट होने का मतलब है they become a never ending kind of a activity. It will become immortal. You'll be there on the portal for long, where people will be taking your idea and probably they'll be able to replicate that ideas into their practices. तो benefits इसके अंदर पे monetary का नहीं मैं बता रही हूँ आपको, पर आपको non monetary benefits इस तरीके से रहेंगे. At the same time, Ministry of Tourism has also taken cognizance of that any kind of a capacity building programs that would taken up later, they would be very happy to assist you in the capacity development program. So these are the few of the benefits that an individual would get if they get listed on this particular competition. Yes, right. Yes, ma'am. So the basic idea will be like all the initiatives which has been selected or which has been identified under this competition will be highlighted on a national level basis, and it will be given that recognition. Maybe it will be also added to the compendium. Like the compendium will be presented for the global industry and students, and it will be like see. Anyways, there are many initiatives are going on in ground level, but it has not been replicated on a national level basis or any. So maybe it can be a very good resources for the other also means other industry stakeholders to replicate or copy for that. Ma'am, so while we choosing all this, as you mentioned, it is like 75 case studies will be chosen on national level basis, and also it will be a certain number of case studies will be chosen for this national compendium. So what will be the areas of evaluation? What exactly will be the criteria for choosing these case studies or initiatives? So the question is कि इसके अंदर पे आपको किस चीज के अंदर पे evaluate किया जाएगा? Naif, I would just request you after we finish up this particular part of it to please share the application process so that the individuals would get to know the areas of evaluation. आपको इसके अंदर पे कुछ क्राइटेरियाज हैं जिसके ऊपर मैप किया जाएगा. पहली बात ये कि आप अपना की प्रायोरिटी एरिया जो है वो सही तरीके से मैप करें. पहली बात तो ये है कि आपको की प्रायोरिटी एरिया पता होना चाहिए. दूसरी बात ये है कि कितने तरह के एसडीजीज यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है वो आप किस तरीके से उनके साथ में अलाइन करते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल आपके इनिशिएटिव जो है वो 3 या 4 एसडीजीज को लेट्स से एड्रेस करते हैं, तो आप उसके अंदर पे मार्क करेंगे. मोर द नंबर ऑफ एसडीजीज दैट यू विल बी एबल टू, यू विल बी डेफिनेटली पुट ऑन अ हायर स्केल. तीसरी बात यह है कि इसके अंदर पे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपके
इस इनिशिएटिव से कितने लोग बेनिफिटेड हुए और कितने लोगों ने आपका साथ दिया इस चीजों को सक्सेसफुल बनाने के लिए। बिकॉज डेफिनेटली कोई इनिशिएटिव अगर लोगों को मदद नहीं करता है तो वो डेफिनेटली इज ऑफ नो यूज। सो वी हैव टू मेक श्योर दैट एनी इनिशिएटिव दैट यू हैव स्टार्टेड शुड बी एबल टू बेनिफिट द अदर पीपल एज सच। चौथी चीज जो इसके अंदर पे बहुत इंपॉर्टेंट होगी कि आपका आइडिया कितना यूनिक और क्रिएटिव है। यानी कि हम इस समय बात कर रहे हैं कि हम सिंपल सी बात नहीं करें कि मैंने अपने यहाँ पे होटल के अंदर एलईडी लाइट्स लगाई तो देखिए मैंने एनर्जी को सेव कर दिया। दिस कुड बी अ वेरी कॉमन आइडिया, पर आपने इसे क्रिएटिवली अगर किसी तरीके से यूज किया है एनर्जी को कंजम्पशन को खत्म करने के लिए, दैट डेफिनेटली वुड बी हैविंग एन एज ओवर द अदर। तो आपका आइडिया कितना इनोवेटिव और क्रिएटिव है, ये बात हो। पांचवी बात जो बात करेंगे कि क्या हम इसे अपस्केल कर सकते हैं नहीं कर सकते। लाइक फॉर एग्जांपल यू माइट हैव स्टार्टेड अप योर आइडिया ऑन अ वेरी मीन स्मॉल नोट, बट मे बी टुवर्ड्स दी आई मीन यू फील दैट इट कैन बी टेकन अप टू अ हायर स्केल। लेट्स से फॉर एग्जांपल अभी आपकी यूनिट 16 लोगों की है और आपने 16 लोगों के अंदर एक बेस्ट इनिशिएटिव लगा दिया। हो सकता है कि आप इस पर्टिकुलर को आप 32 या 100 लोगों के ऊपर भी लगा सकते हैं। तो सिर्फ आई मीन द नेक्स्ट थिंग इज कि आप इस आइडिया को अपस्केल कर सकते हैं या इसकी स्केलेबिलिटी है या नहीं है, ये आप इस चीज के बारे में बात करेंगे। इसके अंदर पे हम ये भी चीज को देखेंगे कि आपका इनिशिएटिव जो है वो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल है या नहीं है। लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल का मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि मैंने आज अपना इनिशिएटिव लगाया है और 2 साल के बाद में इसका इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगी। सो यू हैव टू मेक श्योर कि आपका आइडिया जो है वो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल भी होना चाहिए। तो ये कुछ फ्यू ऑफ दी क्राइटेरियाज है। अब वैसे जब हम आपको बात बताएंगे कि किस तरीके से आप प्रोसीजर को फॉलो करेंगे, आई बी एबल टू टेल यू इन डिटेल अबाउट इट कि किस तरीके से हम अपनी इन इवेलुएटिव क्राइटेरियाज के बेसिस पे चीजों को आगे लेकर जाएंगे। सो दीज आर द क्राइटेरिया। सो एवरी एप्लीकेशन should address to these concerns as such, and when I'll just take you through the application procedure, I mean these are just the important kind of a thing which you cannot forego as such. So make sure that when you are filling up your application form, you are putting up the right kind of a content into it, because what you put is what we would know. Maybe you have a better way, I mean better things as such, but if you're not able to translate that particular thought process into any kind of a documented form, it will not reach to us. So when you are filling up your applications, you have to be very sure in terms of how are you going to tell us about it, because it also has the space limitation. So these are the few criteria, evaluation criteria that we will be having about it. Right, next, thanks. Please, yeah. Yes, ma'am. So I think evaluation criteria is very clear. So how will we have to go for the registration process? As you have requested, I've on when I've shared my screen. So can we do it in a live session, like how the portal and how these applications step by step process So, for applying for this competition? okay, so Naif actually requested me that if we could actually do it live. Now, let me just show you off that we have already made the application live on the portal. Right now, it is for the applicants to fill in the form and just let us know in case if there is any kind of improvement that is required, so that we can fix it and we can make it live for the submission of application. So the first thing that you have to take up is, Naif, just type www.sustainable.tourism.gov.in. So this is the website that you have to reach out to in order to understand about the competition. So once you click in, Naif, if you would just click in, this is the portal that you would be, this is the website that you would be receiving. On the first page of it, this is a particular sustainable tourism website, which is to be, I mean, which is already live and it is under some kind of a construction. I mean, some construction for the few pages, but you would get an alert on the first page, which speaks about travel for life competition. If you could just tap on know more, it will be taking you to a page wherein the details of the competitions are already there, right? Now, this is the case study competition, wherein you have two tabs associated with it. The first tab is about the registration and the second tab is about the more information. Need more information, please. So if you want to know about the competition, you have to click on more information to get the basic ideas. There is a display of the guidelines for Travel for Life competition. I would just request everyone to go through the entire document. In case if you require any kind of an assistant, my team is there to help you out in understanding the things. We also run virtual handholding programs to make the applicants understand about the entire competition concept. So if you would just see to the guidelines, it speaks about it, how Tourism G20 Goa roadmap is aligned with the different kind of things, what are the different key priority areas, and
what is the category of a competition, what will be the benefit of the competition. It speaks about what remains the evaluation procedure. Just let me give you a brief about it. Once we get the applications from the applicants, there will be a first scrutiny by the state as such. The state committee is going to give us the 10 best case studies that they have at their end. Now, after we receive 10 best case studies from each state, there would be a national level committee which is going to screen it, and then the 75 best case studies will be taken up from them. Now, these are the areas of evaluation on the basis of which you would be evaluated. I put it once again, आपका initiative must be able to address to any of the 5 key priority areas that are being mentioned. यहाँ पर हम आइडियाज के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर ऑनगोइंग कंसर्न के बारे में बात करते हैं. आपने इससे में किसी ने मुझसे पूछा कि क्या आइडियाज को यहाँ पर लेकर आएंगे. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अ हाइपोथेटिकल कॉन्स्ट्रक्ट, वी आर टॉकिंग अबाउट अ कॉन्स्ट्रक्ट व्हिच हैज एक्चुअली बीन पुट इनटू एक्शन एंड वी कैन सी द रिजल्ट्स आउट ऑफ इट. सो आप इसके साथ में ये भी बताएंगे कौन कौन से एसडीजीज इसके साथ में लगे हुए हैं. दिस इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस, क्योंकि हमारे हर एक्शन के अंदर पे किसी ना किसी तरह का कोई सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इसके अंदर पे होना चाहिए. एट द सेम टाइम हम इसके अंदर आपके इम्पैक्ट असेसमेंट की बात करेंगे कि हाउ पॉजिटिवली इट इज एक्चुअली इम्पैक्टिंग दी इन प्रमोटिंग द एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी. क्या आपकी इनिशिएटिव की वजह से बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी या नेचुरल हेरिटेज को हम प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं. इज इट गिविंग अ बूस्ट टू एनी काइंड ऑफ इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी एंड अगेन अ सोशल कल्चर. लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इनिशिएटिव से सिर्फ मेरा प्रॉफिट हो रहा है, दैट इज नॉट सस्टेनेबल. पर अगर मेरे इनिशिएटिव के साथ में मास एट लार्ज का किसी तरीके से फायदा हो रहा है, मैं लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे पा रही हूँ, मैं औरतों को सशक्त कर पा रही हूँ, मैं पॉवर्टी या हंगर को किसी तरीके से कम करने की बात कर रही हूँ, मैं लोकल बिजनेसमैन को किसी तरीके से बिजनेस दे रही हूँ, या फिर हम उनकी कल्चर को किसी तरीके से प्रिजर्व कर रहे हैं, दैट कम्स अंडर द पर्व्यू ऑफ सस्टेनेबिलिटी. तो डेफिनेटली आपका ये पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हमारे लिए वैल्यूएटिव क्राइटेरिया बनेगा. फिर इसी तरीके से आपके इनिशिएटिव की वजह से कौन बेनिफिटेड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी इनिशिएटिव अगर किसी को बेनिफिट नहीं करता है, इट इज वेरी सेंसिटिव. सो यू हैव टू मेक श्योर कि आपकी इनिशिएटिव से बेनिफिट होना चाहिए. आपको मैंने बताया कि हमारा 4th क्राइटेरिया जो है वो इनोवेटिव एंड क्रिएटिविटी पर है. इनोवेटिव एंड क्रिएटिविटी का मतलब हाउ न्यू इज योर आइडिया, एंड इवन इफ इट इज अ ओल्ड आइडिया, हाउ गुड एंड हाउ बेटर वे दैट यू हैव प्रपोज्ड इट. मैंने आपको बताया कि इस समय पे बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो इस समय पे सस्टेनेबिलिटी के बारे में बात करती हैं. हम ये कह सकते हैं कि मैंने देखिए इस समय पे लेटेस्ट एलईडी बल्ब्स को यूज करा, मैंने इस तरीके सेंसर वाली चीजों को यूज करा. दिस इज अ वेरी कॉमन काइंड ऑफ अ थिंग. आपको मैं ये बताना पड़ेगा कि आपने अपने बिजनेस के अंदर पे कैसे इनोवेटिवली इस चीज को यूज करा, ताकि हम इन चीजों के बारे में बता सकते हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल, आई जस्ट केम अक्रॉस कि लोगों ने सोलर सेल्स को सिर्फ छत पे लगाकर ही सोलर लाइटिंग की यूज नहीं करा, पर उन्होंने किसी तरीके से इनको विंडो पेन्स में लगाया, टेकिंग इनटू अकाउंट कि किस तरफ धूप जो है वो ज्यादा आती है, एंड दिस इज हाउ दे आर बीइंग यूज्ड. सो हमारे को ये तो पता है कि छत पर अगर हम सोलर कराते हैं तो हमारे को इसके अंदर पे लाइट मिलती है, पर विंडो पेन्स के अंदर पे अगर आपने किसी तरीके से सोलर सेल्स को लगाया, दिस इज अ वेरी क्रिएटिव आइडिया इन इटसेल्फ, ऑल्दो इट इज नॉट अ वेरी न्यू आइडिया. तो आपकी इन चीजों के बारे में बात करेंगे. एट द सेम टाइम आपके सोल्यूशंस जो है वो किसी न तरीके से कोई चैलेंज जो हमने इसके अंदर face करा है, उनको एड्रेस करने चाहिए. एट द सेम टाइम कोई भी इनिशिएटिव जो होता है वो लोगों की सहायता के बिना नहीं हो सकता है. तो आपने किन किन लोगों को इसके अंदर पे एंगेज किया. हो सकता है जब आपने इनिशिएटिव स्टार्ट किया तब आप अकेले होंगे, पर जैसे जैसे आप आगे बढ़ते गए तो कारवां में लोग आपके ऐड होते गए. तो किस तरीके से आपने इन स्टेक होल्डर्स को इसके अंदर पे ऐड किया. एट द सेम टाइम कि कहते हैं आपको ये आइडिया रेप्लिकेट होने की इसके अंदर पे पोटेंशियल होनी चाहिए. रेप्लिकेट होने का मतलब ये है कि वो आइडिया वो सिर्फ मैं अपने आप पे लगा पाऊं और कहीं नहीं लग पाए, ऐसा नहीं हो सकता. डेफिनेटली जो भी आइडिया लेट्स से महाराष्ट्र के अंदर पे इस समय पे सक्सेसफुल है, क्योंकि उसकी क्लाइमेटिक कंडीशंस और बाकी सब चीजें उसको कंड्यूसिव थी, तो ही कुड एक्चुअली मेक इट अ सक्सेस. बट doing that kind of a thing with some kind of a changes into it, I can also make it equally applicable, let's say, in the other part of the country. If I can replicate it, definitely that becomes an evaluative criteria. इसी तरीके से हम उसे अपस्केल कर सकते हैं या हम उसको लॉन्ग टर्म फीजिबिलिटी कर सकते हैं. लास्ट जो मैं आपको फिर दोबारा से बात कर रही हूँ, आप उस आइडिया को किस तरीके, इस बात को किस तरीके से बात करेंगे, दैट इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. आई विल जस्ट रिक्वेस्ट फ्यू पीपल टू मेक श्योर नॉट टू पुट एनी काइंड ऑफ एन irrelevant comments during the interview that doesn't speak about the professional attitude of yours. Please refrain, अपने आप को इन सब चीजों से दूर रखिए, because this is not giving up a good video. So please make sure that you do not put any kind of an irrelevant comments in the chat box. अगर आपको relevant लग रहा है तो आप इसके अंदर पे करें. If you are finding this particular
series, good enough, you can take it away, take it, otherwise you can just leave the portal, that's it. तो आपको ये चीज को भी इंश्योर करना पड़ेगा कि आप अपने आईडी को किस बेहतर तरीके से इसके अंदर पे डॉक्यूमेंट कर सकते हैं। ऑफ कोर्स लास्ट के अंदर पे हमने बेनिफिट्स के बारे में बताया कि किस तरीके से लिस्टेड केस स्टडीज जो होंगी वो इसके अंदर पर आएंगी, और आप एक नेशनल कंपेंडियम पे आएंगे और किस तरीके से आप उन चीजों के बारे में बात करेंगे। तो जब आप नो मोर का बटन दबाएंगे तो आपको ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिलेगा। सो नहीं, इफ यू कुड जस्ट टेक मी टू द होम पेज अगेन, वहां पर अब आपको दूसरा बटन मिलेगा जो लिखा हुआ होगा उसके अंदर पे रजिस्टर। Now, to enter into this competition, you have to register yourself. Only then you will be able to make it into the competition. इस register को बटन दबाने के बाद में, नहीं, if you could just press on this register button. So इस register बटन के बाद में आप इस competition के अंदर पे अपने आप को register कर सकते हैं. So there are few informations that you have to put in to once again ensure that you are individual, you are working for a particular thing, and it is not. Before you register for it, there are certain instructions that has to be followed. Like for example, you have to register before putting up your application form, otherwise you will not be listed into it. You have to make sure this is an ongoing concern and it is running successfully. Definitely successfully का मतलब ये है कि आप इसे continue कर पा रहे हैं. There might be certain lowdowns. I would not say the day that you would start up your project, you'll be into a profit, but there are certain other indicators which speak about the success of a program. Then you must be able, any applicant can submit more than one case study as such. So like, for example, I am a particular company which has 4 initiatives and these 4 initiatives are addressing to 4 different concerns. तो आप इस तरीके से उस केस स्टडी के अंदर आ सकते हैं. केस स्टडी को आप अलग अलग की प्रायोरिटी एरिया में करके आप इसके अंदर पे एंटर नहीं कर सकते हैं. द फिफ्थ पॉइंट इज कि आपको हर एंट्री के लिए एक डिफरेंट एप्लीकेशन देनी पड़ेगी. हालांकि आपका लॉगिन और पासवर्ड जो होगा वो सेम हो सकता है. जो डिटेल्स होंगी वो उसी फॉर्मेट पे हो जो हमने स्पेसिफाई करें. प्लीज मेक श्योर कि उसके अंदर पे आपके पास में वर्ड लिमिट है. सो इफ यू आर अननेसेसरली वेस्टिंग योर टाइम पुटिंग अप एन इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन, you are losing your chance. So you have to make sure that you put in only the relevant information. At the same time, if you have any additional information, there is a space provided which speaks about the link that has to be given. आप उसके अंदर पे अपनी इंफॉर्मेशन को वहां पर लिंक पे दे सकते हैं. एट द सेम टाइम अगर आपको किसी भी तरीके से आपने इनकम्प्लीट एप्लीकेशन करी है, डेफिनेटली इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एंड इट हैज टू बी इन इंग्लिश लैंग्वेज. सो आई वुड जस्ट रिक्वेस्ट द स्टेट अथॉरिटीज टू हेल्प द पीपल टू fill in their application to their best. And why we are keeping it as English is because the assessors or the evaluators that we would have, we have to make sure there has to be a common frame of language. English or Hindi could definitely be taken up, but Hindi font in itself is a very difficult thing to, type it on, and vernacular is not going to work for everybody. So the mode of application would be English. Now, once you have taken up these important instructions, then you press on the proceed button. जब आप proceed button इसके अंदर पे दबाएंगे, ओके जब आपने प्रोसीड बटन दबाया तब आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर यहाँ पे शुरू होता है. फर्स्ट इज कैटेगरी आपकी क्या है. तो यू हैव टू बी वन ऑफ द 3 कैटेगरीज दैट हैज बीन लिस्टेड. या तो आप गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की कोई लाइन मिनिस्ट्री के अंदर पे काम कर रहे होंगे, आपका वो इनिशिएटिव हो सकता है. लाइक फॉर एग्जांपल मिनिस्ट्री जो लेट्स से स्टेट लेवल पर होंगी, वो कोई जल विभाग ने काम कर रखा होगा, या फिर कोई लेट्स से अर्बन डेवलपमेंट ने ऐसा कोई इनिशिएटिव लिया होगा, वो उस पर कर सकते हैं. प्राइवेट स्टेक होल्डर्स, कोई भी प्राइवेट स्टेक होल्डर का मतलब है कोई भी ट्रैवल एजेंट है, टूर ऑपरेटर है, किसी भी तरह की अकोमोडेशन यूनिट है, छोटी से छोटी. लेट्स से आप एक बेड एंड ब्रेकफास्ट के ही ओनर हो, पर आपके इनिशिएटिव से आपको लगता है कि आपने बहुत डिफरेंस लेके आ सकते हैं. नेचुरली उनका जो कंसर्न होगा वो बहुत छोटा होगा इस समय पे, पर बेड एंड ब्रेकफास्ट भी अगर अपने लेवल पे सस्टेनेबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है. मान लीजिए छोटी सी कंपनी है जहां पर सिर्फ आपके पास में 2 ही रूम्स है, पर आपने उसके अंदर भी वेस्ट सेग्रीगेशन का काम किया है. आपने इंश्योर करा है कि इस तरीके से आप सेग्रीगेट करें, या आपने कोई पर्टिकुलर एरिया बना रखा है जहां पर आप एक एक्टिविटी को कर सकते हैं. ये अपने आप में एक बहुत सराहनीय एक्टिविटी है, राइट. तो आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं. एंड ऑफ कोर्स द यूनिवर्सिटी, आई अगेन अर्ज द रिसर्च स्कॉलर्स टू प्लीज कम अप एंड टेक अप दिस पर्टिकुलर कॉम्पिटिशन बिकॉज यू विल बी द एम्बेसडर्स फॉर द यंगर जनरेशन टू टेक इट अप. तो आप इस कैटेगरी के अंदर पे, जिस भी कैटेगरी के अंदर पे होंगे उसको आप करेंगे. नहीं फाकत में से कोई भी कैटेगरी को एक्सेप्ट कर सकते हैं. लेट्स से आप प्राइवेट स्टेक होल्डर्स को एक्सेप्ट कर लीजिए.
अगर Yes, आपके ma'am. प्राइवेट स्टेक होल्डर को करा है, इसके बाद में आपका जो आएगा ऑर्गेनाइजेशन का नाम होगा, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है। एनीथिंग मार्क्ड इन एस्ट्रिक इज अ कंपल्सरी, दैट मीन्स यू कैन नॉट गो विदाउट इट। आप इसके बाद में अपनी स्टेट को सिलेक्ट करेंगे, जिस आप स्टेट को बिलोंग कर रहे हैं। अगेन आई पुट इट अप, हो सकता है कि आपकी यूनिट 4-5 जगह पर काम कर रही होगी, 4-5 स्टेट पे काम कर रही होगी, पर आपकी एप्लीकेशन आप जिस स्टेट को मेंशन करेंगे उसके थ्रू ही आएगी, राइट। तो आपको इस चीज का भी ध्यान रखना पड़ेगा। आपने अपनी स्टेट कर ली, फिर इसके बाद में आप डिस्ट्रिक्ट्स करेंगे। ये ड्रॉप डाउन आपके पास में ऑप्शंस आएंगे, जिसके अंदर से आपको चेक करना है। पिन कोड आपके इसके अंदर पे डालेंगे। आप अपना नाम एंटर करेंगे, आपकी डेजिग्नेशन एंटर करेंगे, जो आप डेजिग्नेशन पे इनिशिएटिव में है। हो सकता है आप ओनर हैं या आप उसके अंदर पे जीएम है, जो भी आप इस समय पे बात कर सकते हैं। एक वैलिड ईमेल आईडी करेंगे। प्लीज डोंट ट्राई टू प्ले अप विद द वर्ड्स, क्योंकि ये सारी चीजें इसमें एक्सेप्टेड नहीं रहेंगी। अपना मोबाइल नंबर इसके अंदर पे करेंगे, विच हैज टू बी अ 10 यूनिट्स काइंड ऑफ अ 10 नंबर काइंड ऑफ अ थिंग। आप अपना यूजर नेम इसके अंदर पे डालेंगे, विच एवर यू फील यू विल बी वेरी कंफर्टेबल विद इट एंड यू कैन रिमेन इट फॉर लॉन्ग। फिर इसके बाद में आप अपना पासवर्ड डालेंगे। पासवर्ड आपका 8 कैरेक्टर्स का होना चाहिए, जिसके अंदर पे लोअर केस, अपर केस, एक न्यूमेरिक और एक अल्फा न्यूमेरिक आप इस कॉम्बिनेशन में यूज कर सकते हैं। रिमेंबर दिस पासवर्ड बिकॉज दिस इज द पासवर्ड विच विल यू बी यूजिंग फॉर दी री रजिस्ट्रेशन काइंड ऑफ अ थिंग। तो आप कंफर्म करेंगे अपने पासवर्ड को। यू विल बी एंटर द कैप्चा, दैट इज अगेन अ वेरी नॉर्मल थिंग बिकॉज वी नीड टू इंश्योर दैट यू आर नॉट अ रोबोट एंड यू आर अ वेरी वैलिड पर्सन एज सच। और इसके बाद में आप इसे सबमिट कर देंगे। सबमिट बटन करने के बाद में नई फार्म आप इसे करके बड़ी को सबमिट कर सकते हैं। वी आर गोइंग ऑन अ लाइव Yes, एप्लीकेशन, ma'am. दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू लुक। आप इसे सबमिट कर Oh, दीजिए। नाउ yeah, ma'am. वंस I'm just सबमिट, you will get a message that you have registered successfully, and if there is any kind of an error that will be giving it will, you'll not be able to submit, so you have to make sure that you have to revisit the entire application form to make sure कि आपकी registration जो है वो इसके अंदर पे सही है। Now once you have submitted, like for example the confirm password not match, so he has to make sure that he has to match up his password. I think आपका ऊपर वाला पासवर्ड जो नीचे वाला पासवर्ड मैच नहीं कर रहा है। Now once you have done the submit part of it, uh, your password is not matching, Naif, so you have to make sure that. yeah, ma'am. Will do it, ma'am. I think I should change my mail. Because he's already registered. I made him registered in the morning, so I think that is how it is. So this is how you would get an alert. Let's say, suppose if you have tried it once and you want to take it again, so this is how it is going to warn you for that. So you will be entering your password. Let's say submit. Sorry, ma'am. User ID already exists. Just 2 minutes. Let me just. Yes, ma'am. Now, Okay. yeah. It says that you have successfully registered, then you would be logging into your feed to fill your application. Now, once you have pressed the OK button, it will take you back again to the page where you would be, taking as a login. आप login करके फिर उसके बाद में आप अपने आप का यूजर नेम डालिए, पासवर्ड डालिए, और उसके बाद में आप अंदर लॉगिन कर सकते हैं। Now, this is where you have registered and you are entering into an application procedure. तो नहीं, फिर एक बार आप अपना पासवर्ड डाल दीजिए इसके अंदर पे, और आप इसके अंदर पे लॉगिन पे जा सकते हैं, राइट। नाउ दिस इज द एप्लीकेशन फॉर्म, हाउ इट वुड लुक लाइक। नाउ द फर्स्ट थिंग इज यू हैव टू नेम द इनिशिएटिव। जो भी आपका इनिशिएटिव होगा आप इसके अंदर पे नाम लिखेंगे। यू कैन पुट अप अ टेस्ट काइंड ऑफ अ थिंग, राइट। आपके कौन से एसडीजीज के अंदर पे एसोसिएटेड है। यू वुड फाइंड दैट एसडीजी हैज मार्क टू इट। इफ यू वुड सिलेक्ट इट, इट वुड लिस्ट आउट द नंबर ऑफ एसडीजीज दैट वी हैव। ये 17 एसडीजीज हैं which has been identified by UNWT, and every country has to abide by getting it reached to by 2030. So let's say अगर आपके 5-6 इसके अंदर पे आपके इनिशिएटिव एड्रेस कर रहे हैं, तो आप उन 5-6 को मार्क कर सकते हैं। एक नहीं, आप इसके अंदर मल्टीपल भी मार्क कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आपके इनिशिएटिव से जेंडर इक्वालिटी, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी, डिसेंट वर्क हो सकता है। एंड लेट्स से क्लाइमेट एक्शन की तरफ आप बात करें, तो नहीं, आप क्लाइमेट एक्शन को भी चूज कर लीजिए। आप इन 5 को जब आप कर लेंगे, तब आप कहेंगे कि दीज आर द इनिशिएटिव्स दैट यू आर एसोसिएटेड विद एसडीजीज। ओके, थैंक यू। देन यू टेक इट टू द नेक्स्ट वाला पे चले जाइए। नाउ वंस यू हैव टेकन अप
then you have a primary key priority area. Please make sure that these are the 5 key priority areas, और इसी से ही आपका initiative match करना चाहिए. Now this time you have to be very wise. Now why I'm saying it so, because कोई भी initiative जो होता है वो एक को नहीं, मान लीजिए वो 2-3 initiatives को किसी तरीके से address कर रहा है, आपको ये चूज करना पड़ेगा आप किसकी नियरेस्ट है और आप किस कंपटीशन के अंदर पे पार्टिसिपेट करना चाहते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल, आपने डिजिटलाइजेशन की वजह से लेट्स से आप एनर्जी को कंजर्व करें, तो आप डिजिटलाइजेशन में भी आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी मतलब डिजिटलाइजेशन में आ रहे हैं, और दूसरा ग्रीन टूरिज्म में भी आ रहे हैं. ठीक है ना. अब आपको ये चूज करना पड़ेगा कि कौन सी की प्रायोरिटी एरिया को आप इसके अंदर पे लेना चाहते हैं. तो आप प्राइमरी की प्रायोरिटी इसके अंदर पे लेंगे. लेट्स टेक अप, आपने ग्रीन टूरिज्म लिया, आप ग्रीन टूरिज्म पे एक बार को टैप करें. जब आपने ग्रीन टूरिज्म ले लीजिए, नहीं ओके, जब ग्रीन टूरिज्म पे आप इसके अंदर पे कर लेंगे, तब उसके बाद में आपके पास में चैलेंजेस आएंगे. जो आप प्रायोरिटी एरिया लेंगे उसी से ही रेलेवेंट आपके चैलेंजेस जो होंगे इसके अंदर पे अपना आप ड्रॉप डाउन करेंगे. अगेन यू हैव टू एंश्योर कि आपका इनिशिएटिव जो है वो इनमें से 1 और 2 चैलेंजेस को कहीं पर मीट करना चाहिए. लाइक फॉर एग्जांपल, आपका चैलेंज जो है आप मेजरिंग बेटर भी कर सकते हैं, हो सकता है कि ट्रांसफरिंग टू ऑपरेशनल स्ट्रक्चर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और ऑपरेशन पर है, तो आप इनमें से इन चैलेंजेस को आइडेंटिफाई करेंगे. लेट्स टेक अप फर्स्ट एंड फिफ्थ, आप इसके अंदर पे ले लीजिए. फर्स्ट एंड फिफ्थ ले लें पारी. ओके फाइन. नाउ आपका इनिशिएटिव जो है, मैंने आपको जैसे बताया, वो मल्टीपल को भी एड्रेस कर सकता है. तो आप अपना सेकंड इनिशिएटिव के बारे में बात करेंगे. लाइक फॉर एग्जांपल, टेक्नोलॉजी की वजह से मैं सस्टेनेबिलिटी लेकर आ पाई और इसकी वजह से एनर्जी को प्रिजर्व कर पाई, पर मैंने सोचा कि मैं ग्रीन टूरिज्म को प्राइमरी रखूंगा, तो मैं डिजिटलाइजेशन को सेकेंडरी मार्क करता हूँ. तो आपने 1 या 2 भी अगर आपके होते हैं तो आप इसके अंदर पे मार्क कर सकते हैं. मान लीजिए कि नहीं, ने डिजिटलाइजेशन लिया. नेक्स्ट, लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ इट. नेक्स्ट पे चले जाइए. Now, once you have taken up a digitalization, now is the time when you will be entering into text kind of a thing. Now, again, please make sure कि आप हर चीज को उसी लेवल के हिसाब से करें और ज्यादा नहीं लिखें उसके अंदर पे, क्योंकि वो उसकी वर्ड लिमिट के बियॉन्ड वो एक्सेप्टेड नहीं होगा. हु लेड द इनिशिएटिव, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. किसने इसको इनिशिएटिव करा उसके बारे में ब्रीफ प्रोफाइल लिखिए. फॉर एग्जाम्पल, यू मस्ट हैव बीन अ पर्सन हु वर, लेट्स से, एन इंजीनियर टर्न काइंड ऑफ एन एंटरप्रेन्योर. सम ब्रीफ अबाउट योर ओन सेल्फ, समथिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट. देन प्लीज प्रोवाइड द ब्रीफ ऑन द इम्पैक्ट. दैट मीन्स यू हैव टू मेक श्योर कि आप उस ब्रीफ इम्पैक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, किस तरीके से वो बेनिफिट कर रहा है. लाइक फॉर एग्जांपल, आपके इनिशिएटिव की वजह से आप एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी लेकर आ रहे हैं, या आपके इनिशिएटिव की वजह से आप एक सोशो इकोनॉमिक के बारे में बात कर रहे हैं, आपको उस चीजों को बताना पड़ेगा. और आप साइट के अंदर पे देख रहे होंगे कि उसके अंदर पे लिख रखा है प्रोवाइड लिंक्स. जस्ट द लिंक्स वी वांट, जस्ट द लिंक्स, सो दैट वी कैन गो टू दैट पर्टिकुलर पेज एंड वी कैन रीड समथिंग मोर अबाउट इट. लेट्स से यू हैव अ लॉन्ग स्टोरी टू से, short, make it fit enough to be added into the questions, and rest anything is there, you just provide us with the link, तो हम वहां पर जाके अपने आप ही पढ़ लेंगे. फिर who are the beneficiaries from the initiative, क्वेश्चन नंबर 8, कौन कौन इससे बेनिफिटेड रहा. हम इसके अंदर पे, आपको ये ऑप्शनल नहीं है, ये आपके लिए कंपल्सरी नहीं है, आप इसको छोड़ सकते हैं क्वेश्चन. वी वुड मैं रियली अप्रिशिएट अगर आप इसके अंदर पे बेनिफिशरीज को ऐड कर पाएंगे. देन क्वेश्चन नंबर 9, कि किस तरीके से आपका इनिशिएटिव यूनिक है और आपका इनिशिएटिव ओरिजिनल है. अगेन, इनोवेटिव एंड क्रिएटिविटी की बात कर रहे हैं कि किस तरीके से यू स्टैंड अपार्ट फ्रॉम अदर्स. दैट इज व्हाई आई एम सेइंग, डोंट टॉक अबाउट अ वेरी जेनरिक काइंड ऑफ अ थिंग व्हिच इज बीइंग एक्सरसाइज्ड एंड टेकन अप बाय द पीपल. टॉक अबाउट समथिंग व्हिच इज वेरी यूनिक. चाहे आप कितनी छोटी सी यूनिक के बारे में बात कर रहे हैं, आप इस चीज के अंदर उस चीज के बारे में मेंशन कर सकते हैं. इसी तरीके से कौन कौन से ऐसे स्टेक होल्डर्स हैं जो इन्होंने इंस्ट्रूमेंटल थे. लेट्स से फॉर एग्जांपल, व्हेन यू स्टार्टेड यू वर अलोन इन दिस थिंग, पर आज आपकी मुहिम के अंदर पे बहुत सारे लोग हैं जो आपके साथ में खड़े हुए हैं. लेट्स से अगर आप गांव से हैं तो विलेज पंचायत कर रही है, आप शहर से हैं तो बेसिक अर्बन म्युनिसिपल आपको मदद कर रही है. लेट्स से इवन आप ये कह सकते हैं इसके अंदर पे सिक्योरिटी फोर्सेस ने आपको इसके अंदर पे मदद करी है, मे बी मेंटेनिंग दैट काइंड ऑफ अ थिंग. जो भी स्टेक होल्डर्स रहे होंगे इसके साथ में इंस्ट्रूमेंटल, आप उनको मेंशन करेंगे. इसी तरीके से क्या ये इनिशिएटिव सक्सेसफुली रिप्रोड्यूस हो सकता है, रेप्लिकेट हो सकता है और कहीं पे लग सकता है, आप इस चीज के बारे में बता सकते हैं. लेट्स से फॉर एग्जांपल, आप ये कह सकते हैं कि मेरे यहाँ पर एवरेज वाटर रेनफॉल इतना था तो आई वाज एबल टू वर्क विद इट, बट इन एनी अदर पार्ट ऑफ इंडिया इफ द एवरेज रेनफॉल अगर थोड़ा सा भी ऊपर नीचे भी होता है, दिस पर्टिकुलर इनिशिएटिव ऑफ माइन कैन बी रेप्लिकेटेड. लेट्स से फॉर एग्जांपल, क्या महाराष्ट्र का इनिशिएटिव राजस्थान में रेप्लिकेट हो सकता है, वेयर द वेदर कंडीशंस आर एब्सोल्युटली डिफरेंट, बट यस यू कैन ऑलवेज सजेस्ट विद दिस काइंड ऑफ अ मॉड, थोड़ा सा चेंजेस, यू विल बी एबल टू रेप्लिकेट दिस आइडिया इन राजस्थान. इसी तरीके से क्या इसको फीजिबिलिटी है अपस्केल करने के लिए. कोई छोटा नहीं रहना चाहता. मे बी व्हेन आई स्टार्टेड अप विद माय प्रोजेक्ट आई वाज
was a very small unit, but now that I have made money, so I want to make it as a bigger kind of an project, तो मैं उसके अंदर भी उन चीजों को अपस्केल कर सकती हूँ। तो मैं इस आइडिया के बारे में भी बात करूंगी। एंड टुवर्ड्स द लास्ट आपको ये बताना पड़ेगा कि किस तरीके से इस इनिशिएटिव की वजह से आप उस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन के होलिस्टिक डेवलपमेंट के बारे में बात कर सकते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल you can say if this idea of mine is taken up by let's say 5 different accommodation unit of that particular destination, entirety के अंदर पे सस्टेनेबिलिटी जो है वो बढ़ जाएगी। सोचिए शहर विदाउट कचरा, सोचिए शहर विदाउट ओवर टूरिस्ट, सोचिए शहर विथ माइंडफुल टूरिस्ट कमिंग टू इट, सोचिए शहर जहां पर हम कहीं पे भी गरीबी नहीं देखते हो, सोचिए वो शहर जहां लोग स्किलफुल बन जाते हैं। तो अगर इस तरह का शहर बन जाता है तो इन इटसेल्फ वो सस्टेनेबिलिटी की तरफ मूवमेंट कर रहा है। एंड लास्ट ऑफ इट, अगर आपके पास में अच्छी 4-5 इमेजेस आपके इस इनिशिएटिव को किसी तरीके से बताती हैं, आप इन सब चीजों को भी अपलोड कर सकते हैं। प्रेस द सबमिट बटन एंड योर एप्लीकेशन इज डन विद इट। सो application in itself is very easy, but it is just that you have to be very careful in terms of what is the choice of words that you use and how you're going to put it. Please make sure that you are putting up very simple language into it. We do not appreciate a very difficult language as such, something which everybody can understand about it. And once it is done, probably there would be a time when you have to really make up a presentation in front of the entire, the committee as such. Again, that would be a shortlisted people who would be given a chance. So this is how the application form is done. So Naif, I think you found it very easy. Any comments to that you would like to add on? So was it okay with you? Or you Yes, ma'am. Actually, it's very clear. Okay, Yes, ma'am. Yes, ma'am. It's very clear, ma'am. Am I audible? Yeah, you are audible. Yeah. Am I audible? Yes, you are audible. Yes. Yeah. So, when we think about case study competitions, when we discussing or when we talk about these competitions, case studies and all, people will be having a false image, like it should have been some 100 page or 300 pages document. So our initiative as a case study it can be a 2-3 pages, or it can be a very brief about the to the point. I mean, we don't have to explain much about it. And if there is a detailed explanation for each criteria or each area of evaluation is there, that can also be uploaded in the link section. That's what, right, ma'am? Oh, yeah. Yeah. So I hope you have found it easy. In case if anybody has any other observation to it, you can always write to us and you can, we'll definitely be very happy. Right now it is open for any kind of a fixing of a solution. So once it is done, then we would be making it live for the application submission from 1st of December. And it goes till 15th of January. Till that time, you can always put in your application. Now, once again, please be sure that you are putting up it in a right kind of a form. Any help related, any query that you have related to it, you will be there. Thank you, Priyanka, that you have registered for the program. We are looking forward for your submission of application. Thank you so much. Yeah, Nick. Yeah, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am, for the entire session. Now let's move on to the next part of the next session. Next part, we'll have an interactive session. So if audience wanted to ask something, you can ask now. I will make them make the You can ask settings them to put according. their queries in the chat box, because if you would In have chat anybody box also come, you can. Yes, yes. Let me please read putting the up. questions in chat. Okay, I think most of them are, right now we are just talking about the CNAST initiative. So it is not about IITFC. In case if you have anything related to IITFC, I'm available on phone for, putting your queries across. So that is why I'm doing it. So let's take up questions. Naif, if you could just take up few questions so that, I'll be Yes, able ma'am. to Yes, answer ma'am. them. See, there is one question from SN. I can't read the name. We being a student of IIFP, can we enroll for the competition on behalf of the private sector with their permission? Okay. Right. Okay, so just let me tell you, irrespective of whatever category that you are from, even if you are a student or even if you are an IIT student, but if you run an initiative which addresses to our parameters as such, you can always enter into it. I also saw if there is any kind of a registration fee to it. There is no registration fee to enter into this competition. It is just that you have to apply through a formal procedure that has been told so that this can be taken up, right?
So anybody from any background as such can take up this competition. Even if you're an IITTF student, doesn't make up a much difference. If you have any initiative and if you have any kind of ongoing concern, you can be a part of this initiative. Yes. Yeah, ma'am. There is another question from Mr. Gopal Naidu, sir, Director Tourism of Andhra. So, is the ongoing project should be covered under the scheme of government? I repeat that once again. What is that? Is the ongoing project should be covered under any scheme of government? Yeah. So thank you, sir, for joining in. And any kind of an ongoing, project that is on right now, so that will be coming under the category of state governments, and you can always register for that program. So there are multiple questions that are coming. If I can see Yes, a lot ma'am. of Yes, them. ma'am. Multiple questions are there, ma'am. I'm reading only the relevant So one, which is I very, think I'll be very quick which on is very taking up relevant few for of all them. the. I'll just take up queries. Yes, ma'am. Mr. Anjali Bharti, who says, can community-based tourism programs participate? Yes, you can participate in the program, provided it is falling under any of the key priority area. You're able to map it against the key priority area, you can participate it into it. Now, there are a few questions related to IITFC. I don't think it is the platform to answer for any of those questions, but I would be taking up once you would be reaching out to me in person, right? Now, Santosh Narayanji says that there is not running an initiative, but he knows somebody who's doing it, so I can do it on behalf of them, is my question. Sir, you can always help that person to register for the program, and if that person agrees to it. If you are from any of the university, if you are a registered student at any of the university, you are a faculty, you are a research scholar, on behalf of that person, then you can do it. Otherwise, please encourage that individual to take up that particular thing. So you can always register on his behalf, but at the same time, you have to make sure that you don't land up into a problem later on. So please make sure that you are including into it. Now, charitable trust, it is Rohit Sharma, charitable trust ongoing project, women empowerment. Boss, I am just again speaking about it. Any initiative which is aligning up with the 5 key priority areas that we have. It should not be directly associated with the SDGs. ऐसे नहीं है कि आपने कहा कि women empowerment का कार्यक्रम है ये, तो women empowerment SDGs को किसी तरीके से तो अलाइन करती है, तो वो टूरिज्म के 5 की प्रायोरिटी एरियाज के अंदर मैं बात नहीं कर रही. अगर आपकी वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम में किसी तरीके से टूरिज्म रिलेटेड एक्टिविटी को बूस्ट मिल रहा है या एनहांस हो रही है, तब आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे. पर आप एक इंडिविजुअल सिर्फ एक चैरिटेबल ट्रस्ट है जहां पर वुमेन एम्पावरमेंट की बातें करते हैं, इफ यू आर नॉट एबल टू मैप इट अगेंस्ट द 5 की प्रायोरिटी एरियाज, देन आई एम सॉरी, आप उसके अंदर आपको दोबारा सोचना पड़ेगा. Rajesh Kumar ji, thank you so much for giving us this an opportunity. We look forward for any of your emails into it. Then we have JNS Gopalji. Even if the ongoing project is not covered any screen, whether the project is eligible for participating in TFL competition? Yes, sir. If there is any kind of an ongoing project in the capacity of private stakeholders, you will be able to participate on that. So that is not an issue. We have already shared up the contact for any further query. So we have with us, the person who is interviewing me right now is the manager CNST. He is a very 24/7 available person for the next 45-50 days. So you can always contact him. Again, be wise in terms of when you make up a call. Anyway, he's always available. So he has mentioned his phone number and also the email ID. Join for this program like Jeevan. In case if you are interested in, I've already shared up the website address to you. It is sustainable.tourism.gov.in. Please visit this website to register for this competition. I think rest we do not have any questions from the YouTube or any other questions. If anybody has, we'll be very happy to take it up. Yeah, Naif. Vikas, are you here? Is there any question from YouTube? Okay. We'll check it from. We'll check once, ma'am. Ma'am, there is one question came. Okay, our guest 2 says, I'm trying to register, but the stage after all the files are filled does not move. Right now, it is into a testing stage. So in case if you have any kind of a problem, please write to us so that we'll be able to fix up a problem. Yet we have not received any query of such kinds. Please make sure that you are filling in the application form as per the format that has been given. So that is it.
Naif has already shared up the link wherein you can reach out to that particular link to register and participate in the program. So any fields that has been marked as red are the compulsory fields. Only fields which does not have a red asterisk mark are the optional ones. So there are just one or two fields which are optional. Rest every field that we are talking of is the mandatory fields. So this is it. So please, our guest too, we would just request you in case if you have any kind of a problem, please write to us so that we'll be able to fix up your issue. Or you can call Naif for fixing up the problems as such. So I once again would like to thank Lee for arranging for this webinar. Again, the basic intent of having this webinar is once again to have a wider reach, to amplify the competition that we are talking about it, encourage people to take up the competition and be a part of the movement that has been started up by Ministry of Tourism, CNAST. We really wish that sustainability should not be just a buzzword, but sustainability should be a part and parcel of everybody's life as such. When I use the word life, it is lifestyle for environment. So every movement that we would take, I think we should, as an individual, take up a pledge. We also have a pledge for tourism for life for tourists. Naif, if you could just share that particular link so that I would request all the participants and all the audience to please register yourself. It is just a voluntary pledge, your first and commitment to move towards it. I also take this opportunity to also encourage all the tourism stakeholders to take up Travel for Life pledge. This is, Travel for Life signed up activity. Travel for Life signed up is meant for the tourism stakeholders, a first step towards your commitment towards sustainability. Thereafter, you would can take up a certification and once again be a part of the entire movement of Ministry of Tourism. So thank you, Naif. Thank you everyone for being such a patient listener. We are available for any kind of a query. I again request all the tourism, the state governments to please amplify the program and make this as a wider program. And we just look forward for your cooperation and a lot of participation applications from the states as such. So thank you, Naif, for giving me this opportunity. Thank you everyone for being there. Over to you, Naif. Ma'am, yes, ma'am. Ma'am, I was just checking the YouTube questions. I think there are a few questions, but we will we'll note We it can down take, and let's maybe take we'll up one be or two. Let's selling them take up to one. replying them later. So we'll collect Okay. all the questions. Okay, fine. So all people on the YouTube, we will be answering you back, giving you back for the queries as such. In case if you have any specific query, please leave us the email ID on which we can personally take up your questions or your contact number. Naif has already shared. Naif, please share your contact details. So in case any kind of a question that remains unanswered, we can take it up and we can reach out to the as many people as we can. Right? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Let's hope for a very good execution of this competition. And I think by end of this competition, we'll be getting more than 1,000 or 1 lakh, or I mean, as much of more case studies from throughout our nation. And also, there are. I hope. I mean, I'm pretty sure that there are many who are already participating in this webinar itself. Might have successfully implemented a lot of initiatives which are related to this case study areas or key priority theme areas which have been already mentioned. So I hope all of them, most of them, will be applying for this competition and will be showcased. Their initiative will be they will be getting an opportunity to replicate their initiatives throughout our nation, and ministry also will be supporting them in. And I suggest this. I hope this webinar will be a handholding session, or it can be a cooperative session, or it can be a march towards more sustainable tourism industry in India. So I would like to extend my gratitude. Even it's like if it is a moderator's duty to gratitude or the thank the speaker, but here in this session, the speaker itself is moderate. It has been giving that to the moderator. So let me officially extend my gratitude to the speaker for sparing time of a busy schedule within on this Saturday itself, and we appreciate your time and insights for today. Thank you, dear participants, for your active participation and thought-provoking questions. I am very happy that we have joined. I mean, most of them have joined in Zoom link itself, and a couple of them have joined through YouTube. So all the people who have joined through YouTube, so I'm extending my gratitude.
So before we conclude, I would like to mention that recording of today's webinar will be available in our YouTube channel. You can subscribe and you can refer that channel whenever you are free. And if somebody have missed some part and all, they can share this channel. And I would also like to request all who have joined today to share the YouTube link towards your circle, among your circles and among your people who are interested. Many have mentioned in the chat box itself, they have certain initiative from other peoples and all, so they can also be shared. I mean, for them also this YouTube link can be shared. So once again, thank you all for joining us today. We hope you found today's session insightful and valuable. Please stay connected with us for updates and future webinars and events. Yeah, I've saw one Korean YouTube like saying that you should be advancedly. I mean, I would have to give you an advance notification about these webinars and all. So let me tell you that I've shared my STJ email over this platform. I mean, this in the chat box. You can mail us your email IDs and you can just put a message like that. You, if you wanted to subscribe for all our newsletters, initiatives, and all things and all. So you can do it through that. Ma'am, before winding up the session, shall we have a group photo? I mean, that was a tradition we used to follow. We can take whoever have joined the session can turn on their video camera for a while, and it's like it's not a group photo. It's like a screen capture, but still, uh, can we do that? Sure. So you just need to put all. Yeah, I request all who have joined today in this session today to turn on their video for a small, I mean, for 2 or 1 second or 5 seconds. We can take a photo. I mean, it can be, see, it's like an of usual procedure in every conference, every event. Video is So, disabled. I mean, that's what everybody is saying. So in case if you could just turn on the video. oh, okay. I think it's done. I do not know. Yes, ma'am. I think already there are 2, 3 people have turned on their videos. It is not done as of now. That's what Shavoni Puri is saying. Still not done. Ma'am, not done. Okay. I think if you Audio are able done, to but video not unmute. done. No, but maybe there Video. is some issue. But anyway, we have captured few during the session as such, so that should not be a problem. Yeah. Thank So you. very Video thankful not done. for that. It's okay, sir. Okay. So in that case, then we can drop that plan. Video not done. Anyways, Video not on. Sir, yeah, video I not on. understood, but I think there is some technical issue behind That's this. it. That's it. Anyways, Let's call it off. I mean, if in case if it is yeah, done. yeah. So where So can I once share again, my? Yeah, now it is done. I think I can see a few people on the screen now. Yeah. yeah, It's done. So happy to see a few people be in the car itself. So there's some people who are traveling. I know it's a Saturday and it's a voting day in Rajasthan as such. So nice to see you all. Right now I'm also in Rajasthan. So I'm in Jaipur right now, so I can feel that, Ma'am, where share this photo? Sorry, sir. Screenshot. Where can I send this screenshot? So we'll do it. We'll yeah, just you share. can. So We'll share Nate, it. We'll share just it. capture it again, please. Let's go it. Also Yeah, from yeah. Hold on. Okay, I'm taking now. Okay. It's a virtual way of being with each other. I think कोविड ने हमें ये तो सिखाई दिया कि दूरी जो है अब इतनी दूरी नहीं रह गई और आई थिंक ये मीडियम्स जो है बहुत अच्छे रह गए वैसे इसके अंदर मैं बहुत सारे मैं IIT Yes. आई मीन पार्टिसिपेंट्स को देख रही हूँ हैप्पी दैट यू पीपल हैव जॉइंड प्लीज स्प्रेड दिस वर्ड अमंगस्ट योर फ्रेंड्स एज सच फॉर ऑल दोज हु आर टूरिज्म प्रैक्टिशनर ताकि हम लोग इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव को हम आगे लेके जा सकें Sure, ma'am.
Okay. Thank you, So, ma'am. thank you, everyone. Yes, ma'am. Thank you all. Thank you Thank you so all. much. Thank you Thank you, so ma'am. much. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you from Kolkata. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, everyone. ma'am. Thank you. Thank you from Bihar, ma'am. खत्म हो गई। हेलो 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 यार किसी ने जो है यूपी टूरिज्म का दिया हुआ था यहाँ पर किसी ने डेट कब आई किसी को पता है? नहीं, अभी डेट का कोई इशू नहीं है। अभी डेट लॉन्च करेंगे कुछ दिनों बाद। अभी तो कुछ ऐसा नहीं। एक्चुअली एक्चुअली मैंने जो है ना अगस्त में मैंने एग्जाम दिया था तो रिजल्ट अक्टूबर में आ गया था। आप अभी किसी ने अगस्त वाला एग्जाम दिया हो या उसको आगे एक्सटेंड कर दी गई है क्या डेट? नहीं, अभी नहीं, उसका मैं भी एग्जाम लिया था अगस्त में, मेरा भी अक्टूबर में रिजल्ट आया था। आई थिंक वी आर सपोज टू जी डू अ सेमिनार, right? We have not yet received any update regarding the seminar. I've been following up with the institution. I'm writing mails and all such. They said they will let us know very soon. खत्म हो गई। मैं ओके। तो कुछ पूछ लूँ इनको से। अरे भैया कोई ये बता दो भैया, फैसिलिटेटर की ट्रेनिंग कब होगी भैया? Yeah, this is all I'm saying. किसी को Yeah, पता है? yeah. This is what I'm saying. किसी को This is पता हो what तो I'm बता asking, दीजिए। asking. But it's सेमिनार है। too late, sir. It is very too late. Happens, I don't know. I mean, what I would suggest is, people those who have taken the IITS in the month of August, maybe if you could share the numbers, we can connect.